अगर केजरीवाल किसी कंट्री के 6 बार दौरे लगा ले और साथ के साथ राहुल भी 4 बार घूम कर आ जाए, तो क्यूरियोसिटी तो हो ही जाती है कि आखिर उस देश में क्या स्पेशल है जो ये भाग-भाग के दोनों जा रहे हैं। एक देश जहाँ से 2 ऑपरेशंस भारत के खिलाफ चल रहे हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली। पंजाब को काट के पीएम बनाने का केजरीवाल का सपना और दूसरा एक साउथ की साइड पर जहाँ पर अब एक्टर विजय जोसेफ आ चुके हैं। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, मिशन चल रहा है साउथ की तरफ। जानते हैं डॉक्टर दीपेश दिवाकरन से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू एंड टू हियर योर फैसिनेटिंग डिटेल्स। अब कहाँ से इतना रिसर्च करके लेकर आते हैं ये सारे डिटेल्स? Thank you, Gayatri ji. So, I guide students, as you know, right? So when I guide students, I always look at geopolitical angle कि आगे future में career का track कहाँ पे जा रहा है. So in that, research, sometimes I get into all these things. The security angle, India angle, what is India's challenges in front of us, and from that, what opportunity we have for our youngsters. So that's how all these writings I do. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 लोग हैं जो भारत के रेडार पर बहुत बुरी तरीके से आ चुके हैं, ऑल बेस्ड इन तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट किया गया है। लेट्स टॉक अबाउट LTTE 2.0 जी। Yeah. So see, I'm not paranoid. Okay, जो बातें मैं करने वाला हूँ, some people may feel that कि I'm talking very extreme things, but I have pointers, I have names, I have date. There are some arrests done by our investigation bureaus and intelligence agencies, and we have a consistent pattern, okay, which I have noticed. अभी इस सब इसके बीच में Norway is a very important country that we have to keep in mind. Okay, why Norway? Because in Norway you'll find that there's around 50,000 Pakistanis settled down there. Okay, and they are in very high positions across government, across private agencies. So they have huge influence. So they have a very strong diaspora there. So let's keep Norway aside. Now let's come to what I'm going to talk about. Let's start from ISI, Pakistan ISI. So as you know that ISI has a doctrine that bleed India from every flank or cut India into 1,000 pieces. वो आज भी चल रहा है simultaneously. So northwest we have Kashmir. They have got decades of investment there. East में Manipur insurgency networks spreaded है. Myanmar corridor जहाँ पे उनको CIA भी help कर रहा है. And you know what Myanmar is today. It's a completely broken country, right? जहाँ से आपका drug networks and everything is flowing. And CIA का जो main revenue source है वो drugs है. आपको लग रहा है कि they function on tax money. It's not the case. So for CIA there are two main revenue sources. One is drugs and one is human trafficking. और उसमें Asim Munir is very very important asset for them in the Asian corridor. So and also to destabilize India is one of the biggest mission, not just for Pakistan but West as a complete ecosystem. Okay, now we have spoken about why South and why Tamil Nadu is very important. Tamil Nadu strategically बहुत ही exposed coastal region है. Okay, 64 kilometers का एक wide narrow point है. Sri Lanka sits exactly in the intersection, and whoever controls narrative of Tamil Nadu influences India's India Sri Lanka मैरीटाइम, policy. हाँ, इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम पॉलिसी मैरीटाइम। तो है और श्रीलंका पॉलिसी भी, राइट? तो एंड whoever influences India श्रीलंका पॉलिसी influences complete Indian Ocean balance. तो स्टेक बहुत ही बड़ा है, ओके? एंड आप देखोगे तो तमिलनाडु ऐसा एक रीजन है, इट गिव्स ओपन एक्सेस टू ऑल दी ट्रेड रूट्स, गोइंग टू मिडिल ईस्ट और गोइंग टू द चाइना, साउथ चाइना सी एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो. So Tamil Nadu is very important. Kerala में challenges है because Kerala में left communist, all that. So you can find that lot of concentration of manufacturing hubs are in Tamil Nadu because of its geography. तो geographically बहुत important है, इसलिए ISI इसको and Pakistan understands this very well. Okay, so let's start from the history. So we know that 2009 में LTT was finished on paper. Prabhakaran died.
बट देन व्हाट वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, ये जो एलटीटी का डेथ हम बोलते हैं कि हो गया, उसका जो फाइनेंशियल नेटवर्क था वो कभी डिसमेंटल हुआ ही नहीं, राइट? मतलब आप देखोगे तो एस्टिमेटेड, जब मैंने रिसर्च किया, $300 million यूज्ड टू कम एवरी ईयर टू एलटीटी फ्रॉम वेस्टर्न इकोसिस्टम, okay, to destabilize Sri Lanka and to destabilize south of India. Although India resisted and Indian intelligence were on the toes towards LTT, we know that, right? तो इसमें 4 मेन सिटीज का आपको जानना बहुत जरूरी है। 4 ग्लोबल नोड्स है एलटीटी का। एक न्यूयॉर्क, सेकंड इज लंदन, थर्ड इज पेरिस एंड फोर्थ इज ऑस्लो, which is your Norway, right? Each node has a distinct function: legal warfare, नरेटिव वॉरफेयर, इंटेलिजेंस एंड रिक्रूटमेंट। ये 4 उनका फंक्शंस है। तो समझ लो आपका 4 ग्लोबल नोड्स है आज एलटीटी का: न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, ऑस्लो। और ईच नोड उनका डिस्टिंक्ट फंक्शंस है: लीगल वॉरफेयर, नरेटिव वॉरफेयर, इंटेलिजेंस एंड रिक्रूटमेंट। ये आपका एलटीटी 2.0 है, ओके, जो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। प्रीवियसली वी वर नोइंग दैट कि एलटीटी इज इन श्रीलंका, आज तो पता ही नहीं है। इट्स डिसेंट्रलाइज्ड अक्रॉस 4 मेन हब्स, ओके, डिनाइबल है और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड। और इसका पूरा फंडिंग बैकअप इज, वन पार्ट इज कमिंग फ्रॉम आईएसआई, एंड हु फंड्स आईएसआई? इट्स आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, all these people. So this funds that they get from World Bank, ISI, it doesn't go for people's benefit. It goes to this funding to dismantle India. That's the whole narrative they set. अभी इसको आगे बढ़ते, right? There is a person called as Vishwanathan Rudrakumaran. Okay, he announces a government called as Transnational Government of Tamil Eelam. Okay, which is called as TGTE. और ये कौन है? He was former legal advisor to LTTE. ये पूरा गवर्नमेंट चला रहा है न्यूयॉर्क में बैठकर। उसका खुद का प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस है। कैन यू बिलीव इट? इनसाइड अमेरिका, ओके। इट होल्ड्स इलेक्शन अमॉन्ग तमिल डायस्पोरा अक्रॉस 14 कंट्रीज फॉर ए कंट्री दैट डज नॉट एग्जिस्ट येट। और ये न्यूयॉर्क से चल रहा है। और आप देखोगे तो ये एलटीटी का जो मतलब एलटीटी एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया हुआ है इवन यूएस में, और वही यूएस गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट को चलाने में मदद कर रही है या जगह दे रही है। तो यूएस गवर्नमेंट ने इनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है? हैव दे गिवन अ ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू देम, या सब अनऑफिशियल? Not official, right? Because it is in the deniability area, no? When you work in intelligence, you know the deniability area, right? So ना उनको डिस्कार्ड किया है, ना उनको एक्सेप्ट किया है, बट all the members of this government is LTT based, right? So if US was genuinely LTT को बैन किया, तो why can't they take action against this government? Because they work in that deniability area. Because उन लोग इलीगल काम न्यूयॉर्क में नहीं करते, right? This is my first layer to you. Second layer which I found out, there is a father, a Catholic father, a bishop called as S.J. Emmanuel. Okay, he is head of another group called as Global Tamil Forum. Okay, इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीच दिया है एज अ ह्यूमन राइट्स वॉइस। श्रीलंकन डिफेंस डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि he was conducting operational training at LTT, और वही बंदा यूके में जाके स्पीच देता है। मतलब लंदन में पूरी तरह से एक्सेस है, राइट? सो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, he used to give specialized training to diaspora outside of श्रीलंका, and still that network is live. तो LTT 2.0 का सिग्नेचर मूव आपको मिलेगा: ह्यूमैनिटेरियन फेज, ऑपरेशनल फेज, you know, he speaks about Tamil advocacy, right? Human Tamil rights pride, violations. Tamil pride. Yeah, Tamil pride. All this stuff is going on. And if you go further, okay, अब इनका फंडिंग कैसे होता है? LTT 2.0 का जो फंडिंग होता है, ये होता है डायस्पोरा डोनेशन और लो वारफेयर है, ग्रांट्स और नार्कोटिक्स। अभी नार्कोटिक्स कॉरिडोर इसमें एक मोस्ट डेंजरस, और कभी आपको पेपर में आएगा नहीं,
ओके, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने, एनआईए ने कुछ अरेस्ट किया था हाजी सलीम गुणशेखरन एंड पुष्पराजा a few years back. उनकी तरफ से they also catched around 9 other people. ड्रग का जो प्रोसीड्स है, जो ड्रग का जो फंडिंग मिलता है, दैट फंडिंग गोज टू इनसाइड विलेजेस ऑफ तमिलनाडु टू रिवाइव एलटीटी प्राइड, तमिल प्राइड. मतलब वी आर सीइंग लाइव radicalization going on inside Tamil Nadu today with the help of this drug cartel. Okay, and as per IB, Intelligence Bureau, 380 billion rupees annually they are making from this narcotics corridor. Matlab, it comes from Pakistan, it goes through our Arabian Sea, goes to Sri Lanka, and from Sri Lanka it goes to Tamil Nadu. This whole narcotics corridor. तो ये अरेस्ट हुआ है, the fact is there in front of us. That means that network is already in place. जो अरेस्ट किसका हुआ है? अरेस्ट हुआ है लोअर लेवल पीपल का. जो अबाउ स्ट्रक्चर है वो that is still there. Okay. Now आईएसआई का ऑब्जेक्टिव क्या है? आईएसआई का ऑब्जेक्टिव कोई तमिल एलम या फिर वो सब नहीं है. Their objective is very simple: bleed India from south. So 3-layer operational चल रहा है. One is narcotics corridor, जो उनका फाइनेंशियल फ्यूल है. तमिल नेशनलिज्म, जो इमोशनल फ्यूल है, जिसको वो भड़काते हैं तमिल पीपल के अंदर. और लेयर 3 है डायस्पोरा लॉबिंग, जो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी देता है. फॉर एग्जांपल, ये जो टीजीटी गवर्नमेंट है या तमिल ग्लोबल फोरम्स है, इस फोरम के थ्रू में इन लोग बात करते हैं. आप अगर आप अभी गूगल में सर्च करोगे ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट फॉर तमिल एलम, आपको सारे कंट्रीज में इंक्लूडिंग यूएन के अंदर इनके मेंबर्स ने बात किया है. मतलब विश्वनाथन, he gets access to UN, he gets access to New York, London, Norway, everywhere, and talk about Tamil pride. Okay, NIA is working on it. Raw is watching. The problem is that do we have the political bandwidth to take action against it? Because if we touch it, then it touches Tamil pride. That's why आप देखोगे तो तमिलनाडु से बेसिकली इंगेजिंग द सिविल सोसाइटी. जैसा पहली बार सीआईए ने रिजीम चेंज किया था इटली के अंदर, उन्होंने क्या किया, सिविल सोसाइटीज को यूज कर लिया, तो लोगों को भड़काकर जनता गिरा देना. एंड देन दे कॉपीड दैट अरब स्प्रिंग, जो अरब या स्प्रिंग, जो this all strategies come from Albert Institute. Okay, Albert Einstein Institute, which is supposed to be science, but it is nothing except it's nothing to do with science. Everything it has 199 ways of non-cooperation or non-violence movement to regime change. ये पूरी strategy वहां से आता है. And they are doing it now massive scale. Okay, and India के अंदर they know India is too big to do one such movement, so they are doing multiple movements. So Punjab one is in South, one is in Manipur, one is in Punjab. You know, they will find out some movements in center also. Cockroach Janata Party is one of that movement which is there, right? So they are waiting with all these toolkits now to get into our things. Okay, TGT अमेरिका में फ्रीली ऑपरेट कर रहा है. आप देखोगे तो अमेरिका में तमिल डायस्पोरा इज वन ऑफ द वेल्थीएस्ट एंड मोस्ट पोलिटिकली कनेक्टेड इन यूएस. आई एम नॉट जनरलाइजिंग दैट ऑल तमिलियन पीपल आर in America, is not, but there are few who are they have lobbying access to US Congress. Okay, multiple US state legislatures have passed जहां पे उन्होंने recognize किया है तमिल genocide के ऊपर. Can you believe it? Some of the states in US have passed a resolution in their house that Tamil genocide has happened in Sri Lanka. So उनको एक political weight मिल जाता है, you know, and that they take it to UN and talk in front of other countries. They can delegitimize India and Sri Lanka and create that southern border disputes. Okay, this is what actually is going on. And see, all these things are not coming in newspapers. No one is reporting about it. But underlying, there is a huge challenge which India is facing, not just in northwest or east, but also in the south. अभी इसके अलावा you will find that there is a demographic engineering going on in real time. आप देखोगे तो most of the in Tamil Nadu, many Hindus are today crypto Christians. Yes. Yeah.
So the Catholics, foreign funding church networks, and that was one reason that Marco Rubio visited Kolkata. Okay, because India tried to touch FCRA amendments. That is what itched them actually. Yeah, because missionaries of charities जो है ये उनका crown jewel है. Okay, so 1960s में, yeah, I think around that area you will find that missions of church was recognized as pontified, और pontification हो गया था उनका with Vatican. मतलब क्या है? Missions of church don't report to any bishops in India, it reports directly to Vatican. क्या? Yeah. So मतलब यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज करेंगे, इंटेलिजेंस करेंगे, regime And they change directly operations report to करेंगे, Vatican. and they will report to Vatican. So Vatican is the one which is running all the churches in India. ये it is Missionaries like of creating no, one. no, no, no. I'm talking about missionaries of charities. जो मदर तेरेसा का जो चर्च है, जहाँ पे मार्को रूबियो ने विजिट किया था, that church. Whosoever they are, except for embassies, nobody else Yeah. is supposed to report to any other country in the world. मतलब because we So have they given them directly, the. so they have granted that specially for missions of charities. और उसके पीछे बहुत dark stories है. That's a different topic altogether. My point is that so there is a conversion racket going on. I think last discussion we talked about that, right? When we're talking about TVK rise, it's a 500-old project. ओके, 5 generations का प्रोजेक्ट चल रहा है तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पे कन्वर्शन ब्रैकेट इज वेरी स्ट्रांग. एंड इवन इफ यू डू सेंसस, इवन इफ यू डू एनआरसी, यू विल नॉट गेट द राइट नंबर्स बिकॉज दिस ऑल आर क्रिप्टो क्रिश्चियंस. उनके नाम आपको दिखेंगे हिंदू नेम्स, बट इंटरनली दे माइट बी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियनिटी. एंड एग्जैक्ट सेम मॉडल इज हैपनिंग इन पंजाब आल्सो. And even in Jharkhand, Yeah, and mind you, Chhattisgarh, tribal this belt. is not this is not possible unless there is a state government support in some way or the other. I'm not putting the allegation completely state government galat hai, but there are some elements in state government. Without that support, this massive conversions is not possible. And इसमें मेरे analysis में in southern side ISI is involved in this. So Yes. So not all community members in Tamil Nadu is complicit on this. There are still some nationalists who still want it, but problem is that the ISI hand is seen in everywhere, okay, across India. तो आप देखोगे कि इंडिया का हर एक बॉर्डर में they are trying to fracture the mandate, and Bengal win for BJP was a big setback for them, very huge setback for them. तो आप देखोगे तो the problem in Tamil Nadu is that Tamil Nadu जो political culture है, they are not yet resolved that Tamil element, relationship with Tamil element, the Tamil identity, Tamil nationality. जो 1925 में जब पेरियार ने शुरू किया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, जहाँ पे द्रविडियन thought and Dravidian ideology, rejecting anything coming from north, okay, accepting the Aryan invasion theory, ये एक बड़ा एक थिंकिंग पैटर्न है इनके अंदर, okay, in Tamil Nadu politics. And shockingly you will find that 27th November, आप गूगल में सर्च करो, 27th November they still celebrate LTTE martyrs in Tamil Nadu. Yeah, it is called as I have a question here. Mahavirar Nal in Tamil it is called. And it is the day when I think one of their cadre got died. I think Colonel Shankar, who died in 1982, and it's still celebrated in Sri Lanka, of course, but in Tamil Nadu also. No state government has banned it. No central government has enforced a ban. दीपेश जी, एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, चाहे वो पंजाब की साइड हो या तमिलनाडु की साइड हो, दोनों साइड हो. वो खालिस्तान की बात करते हैं. खालिस मीन्स प्योर, जो भी उनका वर्ड का मीनिंग हो रहा है. Yeah. Similarly, they're talking about Tamil pride. If the Tamilians are not there, the Tamil identity, which I actually trace it back to Tamil language, right? Yes. Tamil language, Tamilian identity. जब वो language ही नहीं रहेगी, तो वो culture ही नहीं रहेगा, because language और culture दोनों बहुत interlinked हैं. Like वो पूरा वहीं से आता है, traditions वहाँ से आते हैं, वहाँ का बहुत rituals वहाँ से आते हैं. जब वही चीज नहीं रहेगी, तो तमिल प्राइड कहाँ से आ गया? फिर तो क्रिश्चियंस हैं, वो वाइट क्रिश्चियन, चाहे यूरोप में हो वाइट, मतलब ऑब्वियसली द क्रिश्चियंस चाहे वो वाइट वाले हों यूरोप में, या यहाँ वाले हों, या पगड़ी पहनकर पंजाब में हो. तो जब आपका लैंग्वेज नहीं रहा,
आपका रिलीजन नहीं रहा, आपका कल्चर नहीं रहा, तो कौन सा प्राइड, केड़ा प्राइड? So I'll tell you, in as per if you look at psychologically what is happening. So let's look at the numbers first. Muslim population 6% in Tamil Nadu. Christian population another 6%. तो 12% चला गया. बाकी पूरा जो population है it's almost Hindu in Tamil Nadu, and they are very culturally active civilization. Tamil civilization. You will find the largest number of temples are in Tamil Nadu. Yes. Okay, every nook and corner there is traditions, still customs going on. So what was the formula where you can divide them from the India, other cultures, to rise up something called as Dravidian angle, where show that Dravidian angle is much bigger than the Aryan angle or the Sanskrit angle. So they created a narrative that Sanskrit is not a language of Tamil pride, and a narrative was created that Tamil language is much older than Sanskrit language. They are spreading narrative like that, but It's don't the there. people, हाँ, don't the people get it कि संस्कृत से ही निकल कर आई है तमिल, No, it's in a, a debate. It's a it's a debate. debate. It's Okay? a debate people are doing. Both side you have scholars who can debate with each other, and they say that Tamil came first, Sanskrit came first. That can go on. Okay, but the population, the Dravidian jo politics has been going on from last 60, 65, 70 years, and beyond that also, before independence also, right? Iske andar, people are still stuck in that Dravidian ideology, but it is coming out. And Vijay ka jitna is a sign towards that. Ki Dravidian politics is fracturing inside. लेकिन वी आर गिविंग बर्थ टू अनदर मॉन्स्टर, टीवी के हिसाब से आप देखोगे तो जो हुआ टीवी के अंदर, राइट? सो तमिलनाडु इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स स्टेट टू हैंडल. ओके, ऑल्दो इट लुक्स पीसफुल, हमें दिखता है पीसफुल है, लेकिन अंडरलाइंग करंट्स आर वेरी 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 very critical for India as a security issue. And now ISI entering into this creates much more complexity for Indian intelligence. Hmm. So Norway is getting money probably from CIA, giving it to Norway. Norway से ISI, right? Anybody who Yeah. wants to trouble India, hire ISI. So ISI का viability or existence is only till the time they can trouble the Indian government. Otherwise उनकी कोई खुद की value नहीं है, right? Yeah, That is all they are and good for. and now India is entering into a very critical time. Okay, India is going to be attacked economically, uh, kinetically also, psychologically also. It's a very bad time for India, at least for next 3 years. ये जो phase है, it's not an easy time. और इसके अंदर आपको ISI का एंगल भी मिलेगा, LTT, खालिस्तान, Manipur situations will get much more worst. All this will happen. But I feel that somewhere government has understood it. They are taking strong actions. आपको दिखने में आएगा कि in next 1 year or so, जितना मैं पैटर्न समझ रहा हूँ, जो काम अभी लास्ट 2026 में जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, अगर आप पैटर्न को गौर करोगे, वी कैन टॉक अबाउट दैट पैटर्न इन दी प्रॉब्ली अनदर पॉडकास्ट. आप देखोगे तो इंडिया इज गोइंग टू टेक वेरी वेरी स्ट्रांग एक्शन, जो आज तक आपको दिखा नहीं है. जैसे जो कि एक वर्जन आपको दिखाई देगा. आई विल नॉट रिवील मच हियर नाउ, बट होम मिनिस्टर का आपको एक वर्जन दिखाई देगा जो आज तक दिखाई नहीं दिया है in this year. So by June or July, you will start seeing that actions on the ground. Open arrest, strong actions against someone putting a post. A lot of things are going to happen. No nonsense policy, No straightforward. nonsense policy, because things have gone above the head now. And who is this Father Emmanuel? You have written, आपने जो पोस्ट लिखा था एक, उसके अंदर आपने उनके बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, right? Who is Yeah. this? Who is this person? ये श्रीलंका से भी connected है? He's a Catholic bishop, and he was also a LTT trained terrorist, I can say. And he has been very active during LTT also. He was training the cadres that time in diaspora, or आप देखोगे तो in Sri Lanka also. And now today he's bearing a democratic face. Okay,
going to different UN forums and House of Commons and giving speech on Tamil pride or Tamil genocide in Sri Lanka. So Hmm. that's what, and not much more informations you can find about him on the internet. Hmm. But he is now today a soft-spoken face for LTT का जो मैसेज है, कोर मैसेज. Hmm. तो अभी कौन चला रहा है इस वक्त एलटीटी को? अभी अगर मैं बोलूं टॉप में कौन बैठा हुआ है जो चला रहा है इसको? हु इज द सो मास्टर? जो टीजीटी है, राइट, टीजीटी का जो हेड है, दैट इज विश्वनाथन, राइट, टीजीटी that ट्रांस transnational government of Tamil LM, right? It's a ठीक है. different organization. It has its own prime minister, secretary. Uh, they have their own elections every 5 years. They have all the forums sitting in New York, right? इसके ऊपर कौन है, आपको उसका कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं मिलेगा. But I'm sure you have a good guess because you dig very deep in these topics. Yeah. So if you dig deeper, you will find that it is basically intelligence agencies who are running this. The three parts to it: ISI, CIA, and MI6. They are running MI, this. MI6, MI6, UK. UK. So these are the people who are running this, and they are giving them soft cover to run this complete model. और इनका फंडिंग भी यही इकोसिस्टम से आता है. So again, George Soros, Open Society Foundation, and there are other foundations in European country which are basically funders of this particular movement at this Hmm. point. So who is more stronger in these? Because ISI की औकात नहीं है, उनको डिस्कार्ड करते हैं, राइट? Hmm. ISI कुछ नहीं कर सकती है, उनको उनको पैसा फेंक तमाशा देख. CIA and MI6 फंड कहाँ से आ रहे हैं? CIA से मेनली, because I think these days CIA is stronger than MI6 could ever have. Absolutely. CIA is stronger than MI6, and CIA funding, as I told you, उनकी And the पूरी funding, ideology it's from, MI6. yeah, so उनका जो पूरा funding sources है, it is from human trafficking and drug cartel. Okay, तो अगर आप मुझे डीपर पूछोगे तो ऑन पेपर जो अमेरिका का जो बेसिस है अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, 100+ मिलिट्री बेसिस जो उनका है, I have I have seen, I have heard or I have read from various intelligence officers, okay, ex-intelligence officers, that these bases are basically used for human trafficking and drug peddling. Wow. There is no doubt about it. मेरे को कोई शक नहीं है. Illogical भी नहीं लग रहा है. Yeah. क्योंकि So because if their CIA, intelligence agency is running only on drug money, then this can be expected. For them, yeah. nothing So matters except CIA the money. is basically a country inside a country. Yes. They don't report to President of America. They don't report to any democratic government. They are just a separate organization which runs all this, underlying businesses which is going on. Something like Pakistan Army is a separate country in Pakistan. I would put it like Absolutely, that. So something like absolutely. that. That's Because why the Asim Munir uh, is absolutely big important asset for them, because hmm. after Afghanistan went away, you will find that कि जो ड्रग्स का जो बिजनेस है उसका मॉडल का नोड अभी आसिम मुनीर है. ओके, तो आसिम मुनीर को सब जगह पे एक्सेस मिलेगा, व्हाइट हाउस में, सब जगह पे, बिकॉज ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रेवेन्यू सोर्स. एंड इंडिया नोज दिस. So the Pakistan is going nowhere at least for next 5 years even now. लोग बोलते हैं कि Pakistan is not पाकिस्तान going anywhere. No. they'll make sure it survives. They make sure it survives because it is important for them to keep India on check. Okay, and they don't want to destabilize India. Let's understand this. Okay, they want a vassal India, means a controllable India. तो ये लोग जो fractures कर रहे हैं, okay, you will find that these countries will ensure that the Indian economy will keep running. Okay, but they want the prime minister and the government under their control. That's the whole agenda behind this. ये LTT को support करना, this is not ideology. They will support anyone. Okay, so LTT may be running for Tamil ideology, or Khalistan may be running for
खालिस्तान movement. हाँ, Manipur का अलग. I'll come back now. CIA is Yeah. giving the money, but if you look at the history going back 1945, 44, इन लोगों का आइडियोलॉजी था कि ये भारत को जैसे यूनाइटेड छोड़ा था इन्होंने. We had so many Yeah. kingdoms. सरदार गॉड ब्लेस हिज सोल, सच्ची में वो करके गए. आई थिंक ही डिजर्व्स नोबेल प्राइज, नॉट दैट वुमनाइजर नेहरू, राइट. True. उन्होंने इतने किंगडम्स को इकट्ठा करके एक देश बनाया भारत. Looks like कि MI6 wants to leave again, break India into those small parts so that they can just control, attack, take over. जैसे हमारे छोटे छोटे राजा होते थे, अटैक किया, नहीं तो उनके कमीशन दे दिया, जजिया दे दिया अंग्रेजों को, और फिर उनकी सरपरस्ती में रहना. Right? They want to take back India to again the same stage, isn't it? तो आइडियोलॉजी MI6 से आ रही है या CIA has taken the ideology? So there is no difference between MI6 and CIA. Okay. So 1945 में what happened? 1945 में the British gave away the complete controlling power to America. Means जो British का ideology था, it went to America. Nothing changed actually. We are still living under that imperial power system. अभी भी the financial network of the world is running through City of London. And you should know that City of London में UK का parliament have no rights. Okay, City of London works as a separate entity inside UK. और जितना भी आज का financial network है, it runs to City of London, and it reports to Washington, and Washington reports to City of London. That is what it is all about. And उनका जो controlling गुंडा है वो CIA है. And they are all after Bharat now because China पे इनका चल नहीं पा रहा है कुछ. But one change I'll tell you what India did in last 12 years. Okay, last 12 years India strengthened its complete states so much that today they will not afford to break India. If India destabilizes, this whole economy will collapse. World economy. What they And because only want there are so many interlinkages, data centers Yeah. कहीं बन रहे हैं, manufacturing centers कहीं बन रहे हैं, then China को check में रखना, like what Trump faced in China, I think it was nothing less than 4 जूते भिगोकर मारना. मैं अगर बहुत cruel language में कहूँ तो. Absolutely. Right? Absolutely. Literally, he was thrashed without being thrashed. कहते हैं ना, the way he was made to sit on a chair, the way he was shown by Xi Jinping, this is a 200-year or 300-year-old tree, telling America, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे बहुत पहले से हम लोग हैं यहाँ पे, indirectly, right? Yeah. Food tables pay, and then where is it going now? They can't afford to have us destabilize India, but yet they are poking their nose into the matters of the Indian government. Ji. Because they are not able to get the access they wanted. Okay, so America क्या है? America is today a group of companies, corporations which is bigger than America. Okay, so there are three entities in America. One is financial industrial complex, second is आपका military industrial complex, and third is technology industrial complex. And technology industrial complex reports to financial industrial complex. And who is this financial industrial complex? Again, City of London, BlackRock, State Street, Vanguard, and they are bigger than America today. Even just BlackRock, they manage $10 trillion of assets. India का GDP है $4 trillion, 4.3 something. So BlackRock is bigger than Indian GDP. That's a control they have. Okay, and now this financial industrial complex have understood one thing, that this model of keeping dollar as hegemony और तो दुनिया को चलाओ, ये नहीं चलने वाला है, अनसस्टेनेबल है. 333 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा आ गया है दुनिया के ऊपर, इसको वापस देना इम्पॉसिबल हो गया है. सो दे वांट अ न्यू मॉडल. उनका न्यू मॉडल है मल्टीपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर से निकलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड. तो इसके लिए ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया को ब्रेक करना, they can't afford it now because we have moved away from that. But yes, they want a controlled government. Keep troubling. Rahul Gandhi or some other person who can't think for himself,
but they will give them thinking and he will do it. That's Right. what is not happening. That's why this kind of elements are coming up. राइट, तोड़ना That's नहीं, why तोड़ people नहीं have to सकते तो understand. एटलीस्ट कंट्रोल करके रखें, दैट इज हाँ, व्हाट दे आर तो वर्किंग अपने ऑन लोगों राइट को नाउ। ये समझना है कि हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ये क्यों हो रहा है। अगर रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है, अगर यू नो वी आर गेटिंग वी आर पुट अंडर प्रेशर, narratives are going against us, why it is happening? Because they want India to be controlled, and people have to understand it. Everything government will not able to come and say on national television, right? या अंडरस्टूड जी। थैंक यू सो मच दीपेश जी फॉर Thank जॉइनिंग। you. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता और मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। Thank you.